भेरी गुड मॉर्निंग पे मेसेज वॉइस आसुच्छी मेसेज गोटे देदेव ओके ठीक अच्छे आज आम डिस्कसन करवा CORE-09 पेपर जहाँकि अटे +3 4th सेमिस्टर मैक्रो इकोनॉमिक्स पेपर 2 मैक्रो इकोनॉमिक्स तीन टा पेपर थाए CORE-1 रे थाए आमर फर्स्ट सेकंड सेमिस्टर गोटे रोचे थर्ड सेमिस्टर गोटे रोचे आ गोटे फोर्थ सेमिस्टर रे रोचे The golden rule of capital accumulation ensures गोल्डन रूल ऑफ कैपिटल accumulation रे कौन होता है मिनिमम सेविंग होता है ना मैक्सिमम कंजप्शन इन स्टेडी स्टेट ना मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट ना जीरो अनएम्प्लॉयमेंट होता है गोल्डन रूल ऑफ कैपिटल accumulation गोल्डन रूल ऑफ कैपिटल accumulation रे हुए मैक्सिमम कंजप्शन एंड स्टेडी स्टेट किए देइथिले गोल्डन रूल ऑफ कैपिटल accumulation गोल्डन रूल ऑफ कैपिटल accumulation इट वाज गिवन बाय किए देइचंती आपको देइचंती एडमंड फेल्प्स गोल्डन रूल ऑफ कैपिटल accumulation एके ग्रोथ मॉडल वाज फर्स्ट डेवलप्ड बाय फर्स्ट के डेवलप करथिले एके ग्रोथ मॉडल को प्रथम के डेवलप करथिले एके ग्रोथ मॉडल एके ग्रोथ मॉडल के दे जानते जेफ्री फ्रैंकल Schumpeter emphasized the role of dash and economic development. Schumpeter कोटि को एम्फासाइज करथिले काहा ऊपर एम्फासाइज करथिले काहार रोल ऊपर फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट Schumpeter काहा ऊपर करथिले इनोवेशन ऊपर करथिले अंडरडेवलप्ड कंट्रीज नीड डैश टेक्नोलॉजी फॉर डेवलपमेंट अंडरडेवलप्ड कंट्री को टेक्नोलॉजी यूज करबा कथा डेवलपमेंट पाई एडवांस टेक्नोलॉजी ना इंटरमीडिएट टेक्नोलॉजी प्रिमिटिव टेक्नोलॉजी ना डिजिटल टेक्नोलॉजी कौन यूज करबा कथा डेवलपमेंट पाई कौन यूज करबा कथा इंटरमीडिएट टेक्नोलॉजी लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम विथ टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम विथ टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस इज कॉल्ड कौन कहा जाए ताको बिजनेस साइकिल ना स्टेडी स्टेट इक्विलिब्रियम ट्रेड ऑफ इक्विलिब्रियम ना जनरल इक्विलिब्रियम बिजनेस साइकिल कहा जीवा ना स्टेडी स्टेट इक्विलिब्रियम ट्रेड ऑफ इक्विलिब्रियम ना जनरल इक्विलिब्रियम long term growth with technological progress is known as steady state equilibrium growth accounting was devised by growth accounting was devised by Robert Lucas na Edmund Phelps Robert Solow na Jeffrey Frankel growth accounting के Robert Solow A model with intertemporal consumer maximization was given by
AK model with intertemporal consumer maximization was given by କିଏ ଦେଇଥିଲେ? ରୋମର, ପି ରୋମର। इंटरटेम्पोरल कंज्यूमर मैक्सिमाइजेशन एक मॉडल देते पी रोमर। लेबर एफिशिएंसी इज इंट्रोड्यूस्ड इन सोलो मॉडल टू इनकॉर्पोरेट labor efficiency is introduced in Solow model to incorporate saving investment na technological progress na government policy। saving investment technological progress na government policy। आंसर कौन होगा? टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस। बैलेंस ऑफ पेमेंट इज ऑलवेज कौन हम? बीओपी। बैलेंस ऑफ पेमेंट कौन होता है? बैलेंस ऑफ पेमेंट सब डेफिसिट हुए ना बैलेंस हुए ना सरप्लस हुए, कौन हुए? बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑलवेज बैलेंस। डिफरेंस बिटवीन एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट ऑफ गुड्स इज कॉल्ड। एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट डिफरेंस को हमें कौन कहे? डिफरेंस बिटवीन एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट ऑफ गुड्स। कौन कह? बैलेंस ऑफ ट्रेड। The account containing export, import and unilateral transfer। को अकाउंट को कैपिटल ना करंट अकाउंट, फाइनेंशियल अकाउंट ना रिजर्व अकाउंट। सर रही आमर करंट अकाउंट कह। इफ एक्सपोर्ट ग्रेटर देन इम्पोर्ट ताले बैलेंस ऑफ ट्रेड कौन हम? एक्सपोर्ट इज ग्रेटर देन इम्पोर्ट हेले फेवरेबल बीओपी हुए। ये कौन हम? बीओपी रिकॉर्ड्स बीओपी कौन रिकॉर्ड करे? बीओपी रिकॉर्ड करे ऑल इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन विद द वर्ल्ड। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व आर इंक्लूडेड इन करंट अकाउंट ना कैपिटल अकाउंट ना बैलेंस ऑफ ट्रेड अकाउंट ना रिजर्व अकाउंट। कौन रहा? फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व इंक्लूड हम कौटे? फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व थाए कैपिटल अकाउंट। गिफ्ट एंड ग्रांट टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड आर टर्म्ड एज कौन कह? गिफ्ट एंड ग्रांट को इन्वेस्टमेंट, करंट ट्रांसफर ना यूनिलैटरल ट्रांसफर ना ट्रेड बैलेंस। जो यूनिलैटरल ट्रांसफर। पीपीपी थ्योरी वाज गिवन बाय पीपीपी थ्योरी के देजंती? पीपीपी थ्योरी वाज गिवन बाय
PPP theory was given by Gustav Cassel. J curve effect relates to curve effect कोठी थिला J effect J curve effect relates to depreciation effect on balance of trade. Exchange rate is determined by demand and supply of foreign currency. An increase in the exchange rate बढ़िले कौन कहा जाए? An increase in the exchange rate is called appreciation. A fall in the exchange rate is called तार opposite हबो appreciation opposite कोट हबो depreciation. ये कौन हला कहला 22 $1 moves from ₹70 to ₹75. $1 moves from ₹70 to 75. It means कौन हला appreciation of rupee na depreciation of dollar na appreciation of dollar and depreciation of rupees na both currency depreciate. $1 moves from 70 to 75 rupees कौन हो आग 70 टंका देले गोटे डॉलर मिलुथला एबे 75 टंका देले गोटे डॉलर मिलुची ता माने डॉलर रो वैल्यूटा बढ़ीची आ रुपी रो वैल्यूटा कमीची डॉलर हबो अप्रिशिएट रुपी हबो डेप्रिशिएट ऑटोमेटिक वैल्यू कौन कह जाए ताको ऑटोमेटिक फॉल इन करेंसी वैल्यू जो डेप्रिसिएशन ऑटोमेटिक डिमांड एंड सप्लाई को नहीं ऑटोमेटिक वैल्यू कमुची फॉरेन करेंसी ताको डेप्रिसिएशन कहूँ और डेलिबरेटली जदि फॉल करा जाउची कौन कह जाए डेलिबरेट फॉल इन करेंसी वैल्यू डेलिबरेटली आम जदि वैल्यूटा को कमेबा ताल ताको कौन कहबा कह जाए डिवैल्यूएशन डिवैल्यूएशन इज सक्सेसफुल केते बेले हुए डिवैल्यूएशन सक्सेसफुल केते बेले हुए जदि मार्शल लर्नर कंडीशन सैटिस्फाई होबो ना इंपोर्ट एक्सीड एक्सपोर्ट ना इन्फ्लेशन राइज कले ना डिफ्लेशन हेले डिवैल्यूएशन केते बेले सक्सेसफुल हुए एमएल कंडीशन सैटिस्फाई हेले ना इंपोर्ट एक्सीड एक्सपोर्ट ना इन्फ्लेशन ना डिफ्लेशन को केस रे होबो प्रथमटा अच्छे मार्शल लर्नर कंडीशन कौन हम आंसर एमएल कंडीशन मन रखि डिवैल्यूएशन सक्सेसफुल हवा पाई कौन अच्छी ना गोटे मार्शल लर्नर कंडीशन अच्छी से जदि सैटिस्फाई हम ताहले डिवैल्यूएशन सक्सेसफुल हम मार्शल लर्नर कंडीशन कौन कहे मार्शल लर्नर कंडीशन सम ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट केते हवा दरकार पहले एमएल कंडीशन टा ग्रेटर देन 1 हो इलास्टिसिटी ऑफ एक्सपोर्ट प्लस इलास्टिसिटी ऑफ इंपोर्ट मस्ट बी ग्रेटर देन 1 ग्रेटर देन 1 हेले जाई सक्सेसफुल हबो कोटा ना डिवैल्यूएशन सक्सेसफुल हबो सेता बेले जदी सम ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ एक्सपोर्ट प्लस इंपोर्ट ग्रेटर देन 1 हुए रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड पॉलिसी द्वारा कौन हुए डेप्रिसिएशन हुए ना अप्रिसिएशन ऑफ रियल एक्सचेंज रेट ना इन्फ्लेशन ना ट्रेड डेफिसिट रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड पॉलिसी
रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड पॉलिसी कौन होता है? रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड पॉलिसी रे कौन हम? एप्रिसिएशन ऑफ रियल एक्सचेंज रेट। In a small open economy, capital flow curve is small open economy रे capital flow curve टा को भली हबो? inelastic, perfectly elastic, vertical ना downward sloping? inelastic, perfectly elastic, vertical ना downward sloping? कौन है जीवो? perfectly elastic. In closed economy, capital flow curve is closed economy रे capital flow curve टा कौन हबो? closed economy रे हिजबो vertical. Mundell-Fleming model, closed economy model ना open economy ISLM model, Keynesian model ना neoclassical model? Mundell-Fleming. Mundell-Fleming टा को model? Mundell-Fleming हला गोटे open economy ISLM model. In small open economy, interest rate is determined by small open economy. Small open economy, interest rate is determined by domestic policy, world trade, world interest rate ना fiscal policy ना government spending. In small open economy, interest rate is determined by small open economy रे कौन हबो? world interest rate जहाँ थिबो ताको ही consider करा जाए। तेणु small open economy world interest rate को affect करि पारेनी। IS curve in open economy shows relationship between IS curve in open economy shows relationship between का भितर देखैबो? open economy रे IS curve real income and real exchange rate. Mundell-Fleming model determines कौन determine करे? inflation, equilibrium, real income, exchange rate, unemployment, money supply कौन करिवो? equilibrium, real income and exchange rate. Classical aggregate supply curve को भलिया था? classical रे aggregate supply curve vertical. LM curve in Mundell-Fleming model को भलिया शेप था? LM curve Mundell-Fleming model रे LM curve रा शेप कौन था? LM curve टा हला vertical Mundell-Fleming रो. In small open economy, aggregate demand curve. In small open economy, aggregate demand curve upward sloping, downward sloping, vertical ना horizontal? In small open economy, aggregate demand curve कौन है जीवो? downward sloping. Expansionary monetary policy shift LM curve. LM curve कुआडे shift हुए? expansionary monetary policy रे. expansionary monetary policy हेले LM curve कुआडे shift हबो? leftward rightward कुआडे जीवो? rightward जीवो. expansionary हेले rightward. horizontal short run aggregate supply curve is horizontal short run aggregate supply curve. ताले ताको कौन कहबा? क्लासिकल कहबा ना केन्सियन कहबा ना न्यू क्लासिकल कहबा ना सप्लाई शॉक कर्व कहबा? horizontal जदि हला short run aggregate supply curve सेटा होता है केन्सियन. The difference between potential and actual GDP कौन कह जाए?
पोटेंशियल और एक्चुअल जीडीपी रो डिफरेंस को तो कह जीवो जीडीपी गैप इन इन्फ्लेशनरी गैप कौन हुए एक्चुअल आउटपुट और पोटेंशियल आउटपुट भितर कौन रिलेशनशिप रहिबो इन इन्फ्लेशनरी गैप इन्फ्लेशनरी गैप रे कौन हो एक्चुअल आउटपुट इज ग्रेटर देन पोटेंशियल आउटपुट इन रिसेशनरी गैप रे कौन हो तार ऑपोजिट हबो एक्चुअल आउटपुट इज लेस देन पोटेंशियल आउटपुट लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व शेप को बढ़िया हम लॉन्ग रन रे एग्रीगेट सप्लाई कर्व हो वर्टिकल पोटेंशियल जीडीपी इज ऑल्सो नोन एज एक्चुअल जीडीपी शॉर्ट टर्म जीडीपी लॉन्ग टर्म जीडीपी ना नॉमिनल जीडीपी कौन कह जाए पोटेंशियल जीडीपी को लॉन्ग टर्म जीडीपी कह जाए फुल इक्विलिब्रियम occurs when inflation equal to 0 ना जीडीपी इक्वल टू मनी सप्लाई एक्चुअल जीडीपी इक्वल टू पोटेंशियल जीडीपी ना नो अनएम्प्लॉयमेंट फुल एम्प्लॉयमेंट केतेबेले कहबा एक्चुअल जीडीपी इक्वल टू पोटेंशियल जीडीपी vertical long run aggregate supply curve indicates deflation unemployment full employment gdp ना hyperinflation हैला full employment gdp objective of fiscal policy include price stability full employment reduction of inequality na all the above objective of fiscal policy कौन हबो ये सब गुडा हबो all the above price stability full employment reduction of inequality सब instrument of fiscal policy रो instrument कोटा taxation government expenditure ना bank rate CRR ना repo rate कौन हबो instrument of fiscal policy हेगला taxation और government expenditure tax multiplier formula कौन taxation multiplier हेगला formula minus b divided by 1 minus b government expenditure multiplier हला 1 divided by 1 minus MPC b जोटा सेटा हला MPC contractionary fiscal policy help कोथरे हेल्प करे contractionary fiscal policy helps to control deflation ना inflation कौन करिवो inflation टाइम रे कौन करा जाए कंट्रोल करिवा पई करा जाए contractionary fiscal policy आउ expansionary करा जाए कौन पे expansionary fiscal policy used to control deflation inflation increase taxation ना reduce government expenditure कौन हबो ये हबो deflation control में expansionary fiscal policy qualitative credit control instrument include qualitative नहीं quantitative अछि क्वांटिटेटिव रे कौन कौन जाउची क्वांटिटेटिव रे हला बैंक रेट ओपन मार्केट ऑपरेशन सीआरआर एसएलआर ऑल देबो कौन जेबो क्वांटिटेटिव रे सब जेबो ये सब हला क्वांटिटेटिव तापरटा क्वालिटेटिव
क्वालिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल इंस्ट्रूमेंट इंक्लूड क्वालिटेटिव रे कौन जीव क्वालिटेटिव रे एठु जीव मार्जिन रिक्वायरमेंट एंड रेशनिंग ऑफ क्रेडिट आउ तीनटा हला क्वांटिटेटिव टू चेक इन्फ्लेशन टाइम रे गवर्नमेंट कौन करिवो टू चेक इन्फ्लेशन गवर्नमेंट में कौन करिवो इंक्रीज सीआरआर एसएलआर रिपो रेट ना डिक्रीज सीआरआर ना इंक्रीज एक्सपेंडिचर ना डिक्रीज टैक्सेशन कौन करिवो एठी सब इंक्रीज करिवो सीआरआर एसएलआर रिपो रेट टू चेक डिफ्लेशन कौन करिवो डिफ्लेशन को चेक करिया पई कौन करिवो रिपो रेट बढ़ाइबो ना कमेइबो रिपो रेट को कमेइबो फुल एम्प्लॉयमेंट मीन्स कौन जीरो अनएम्प्लॉयमेंट ना एब्सेंस ऑफ इनवॉल्यूंटरी अनएम्प्लॉयमेंट ना मैक्सिमम इन्फ्लेशन नेगेटिव जीडीपी गैप फुल एम्प्लॉयमेंट फुल एम्प्लॉयमेंट माने हला एब्सेंस ऑफ इनवॉल्यूंटरी unemployment. Classical theory believes full employment is unattainable, na temporary, na a normal feature, na rare case. Full employment, according to classical, full employment is a normal feature. In classical theory, the rate of interest equates. In classical theory, the rate of interest equates demand and supply of money, na saving and investment, na taxation, expenditure, consumption and investment. In classical theory कौन हुए सेविंग और इन्वेस्टमेंट को इक्वेट करता है रेट ऑफ इंटरेस्ट. Classical theory's foundation is wage and price flexibility, government intervention, fixed wage, na wage rigidity. Classical theory's foundation. Classical theory foundation. कोटा है जीवो wage price flexibility. के देतले पिगु देतले. जेबी सेज लॉज स्टेट्स दैट सेज लॉ ऑफ मार्केट कौन थिला एटा जानि थिबो सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड. Keynes argue that equilibrium can occur. Equilibrium कोठ हो full employment ना below full employment ना during inflation during recession. full employment हवा सब बड़े below full employment. Effective demand means supply creates demand na aggregate demand equals to aggregate supply exceeds aggregate demand, inflation adjusted demand. Effective demand केतल कहबा जेतेबेले aggregate demand equals with aggregate supply. According to Keynes, money serve as only medium of exchange, na store of value and medium of exchange, only store of value, na only unit of account. कौन है जीवा store of value and medium of exchange. Keynes considered the main cause of unemployment according to Keynes कौन थिला wage rigidity ना inflation ना lack of effective demand ना high interest rate. कौन थिला lack of effective demand. Transaction and precautionary demand for money depends on transaction and precautionary demand for money depends on interest rate ना income level ना inflation rate ना exchange rate.
कहा उपरे इनकम उपरे डिपेंड करता। स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी इज ए फंक्शन ऑफ स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी कहा उपरे डिपेंड करे रेट ऑफ इंटरेस्ट उपरे। Phillips curve shows the relationship between inflation GDP ना inflation unemployment inflation taxation wages investment। Phillips curve कौन देखेबो? Phillips curve shows the relationship between inflation and unemployment। Political business cycle theory was given by political business cycle theory was given by के देचंती मिचेल काले के देचंती हमारा political business cycle theory। In the long run Phillips curve is long run रे Phillips curve कौन हो जाए? In the long run Phillips curve long run रह जाए vertical। Inflation augmented Phillips curve was developed by inflation augmented Phillips curve was developed by Gustav Cassel ना Milton Friedman Robert Lucas ना जेविसेज। इन्फ्लेशन अगमेंटेड फिलिप्स कर्व के देचंती मिल्टन फ्रीडमैन। रेशनल एक्सपेक्टेशन थ्योरी वाज डेवलप्ड बाय रेशनल एक्सपेक्टेशन थ्योरी के देचंती केन्स ना रॉबर्ट लुकास थॉमस सर्जेंट मिल्टन फ्रीडमैन गुस्ताव कैसल के देथिले। रेशनल एक्सपेक्टेशन थ्योरी देचंती रॉबर्ट लुकास थॉमस सर्जेंट। Causes of wage stickiness include perfect competition, efficiency wage and imperfect information, flexible prices na government control। Causes of wage stickiness कौन हो? Efficiency wage and imperfect information। In the long run there is no trade-off between GDP inflation, inflation unemployment, inflation money supply na inflation and growth। No trade-off between inflation and unemployment। Coordination problem contribute to wage flexibility, wage stickiness, fiscal expansion, open economy isolation। Coordination problem contributes to coordination problem कोठी wage stickiness। Full employment according to classical theory is due to government intervention na price wage flexibility na labor union na technological advancement। Full employment according to classical theory is due to full employment is due to wage price flexibility। Keynes emphasized the importance of government non-intervention na demand management policy na free market only strict monetary policy। का ऊपर फोकस करते Keynes emphasized on demand management policy। liquidity preference theory के देते रॉबर्ट लुकास मिल्टन फ्रीडमैन जेम केन्स ना मिचेल काले के देचंती केन्स देते liquidity preference। In the Keynesian model investment is influenced by MPC na government expenditure inflation। And in the Keynesian model investment is influenced by investment का द्वारा influence होतला Keynesian model रे rate of interest। According to Keynes an increase in interest rate बढ़िले investment कौन हबो? Decrease investment, increase investment, no effect na increase consumption। interest rate बढ़ी long run growth depends on fiscal deficit, aggregate demand, technological progress and productivity na high taxation।
लॉन्ग रन ग्रोथ डिपेंड्स क्या ऊपर डिपेंड करे टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस एंड प्रोडक्टिविटी इन द बेसिक सोलो मॉडल इकोनॉमिक ग्रोथ डिपेंड्स मेनली ऑन सोलो मॉडल रे इकोनॉमिक ग्रोथ क्या ऊपर डिपेंड करछि बेसिकली गवर्नमेंट स्पेंडिंग ना कैपिटल एक्यूमुलेशन लेबर ग्रोथ टेक्नोलॉजी ना इन्फ्लेशन मनी सप्लाई capital accumulation, labor growth, and technology. The golden rule level of capital maximizes total saving, total investment, consumption per worker, now wages. The golden rule level of capital maximizes कौन consumption per worker. In the Solow model, the steady state is achieved when steady state केतेबेला हबो capital stock grows faster than output, investment equals depreciation, inflation is zero, ना unemployment is minimized. केते हिजबो जेतबेला investment equals depreciation. The transition to golden rule steady state with too much capital requires increasing saving, reducing saving, rising taxation, increasing labor supply. कौन है जो बैठे reducing saving. If an economy has too little capital in steady state to achieve golden rule, कौन करा जिबो decrease saving, increase tax, reduce output. It have increase saving. Last question है ये पूरा opposite question. In Solow model, population growth causes increase in capital per worker, decrease in capital per worker, inflation, na constant per capita income. Solow model, population growth causes कौन है population बढ़िले decrease in capital per worker. Technological progress in Solow model is introduced by Solow model रा technological progress is introduced by increasing money supply, increasing labor efficiency, increasing taxation and decreasing saving. कौन है जो labor efficiency ऊपर depend करे. Beyond Solow model, growth theories are called classical, na Keynesian, na monetarist, na endogenous growth theory. Beyond the Solow model, कौन को जाता को endogenous growth theory. In endogenous growth model, technological progress is considered. Endogenous growth model रे technological progress is considered exogenous ना endogenous. वो endogenous. One key assumption of Solow model is constant return to scale, increasing return to scale, decreasing return to scale, no return to scale. One key assumption of Solow model वाला constant return to scale. এটা যাইছি BOP record of all economic transaction. BOP equilibrium କେତେବେଳେ ହେଉଛି export exceed import, import exceed export, total credit equals debit. BOP disequilibrium कौन है जो credit not equal to debit. The theory of exchange rate is determined by balance of payment is called co-theory, balance of payment theory. Fixed exchange rate system means exchange rate vary daily, government maintains a fixed rate, market determine rate, rate changes with inflation. Fixed exchange rate रे कौन रहेगा फिक्स रहेगा.
फ्लेक्सिबल रे कौन हुए फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम रे रेट इज फिक्स्ड ना रेट इज डिटरमाइंड बाय मार्केट फोर्सेस रेट इज कंट्रोल बाय गवर्नमेंट नो फॉरेन एक्सचेंज ट्रेडिंग इज अलाउड कौन हुए फ्लेक्सिबल रे मार्केट डिटरमाइन करिवो रेट इज डिटरमाइंड बाय मार्केट फोर्सेस द बेसिक मंडल-फ्लेमिंग मॉडल अप्लाइज टू क्लोज ना ओपन इकोनॉमी कोटा हबो मंडल-फ्लेमिंग हला ओपन इकोनॉमी मॉडल in Mundell-Fleming model under flexible exchange rate monetary policy is in Mundell-Fleming model under flexible exchange rate monetary policy is effective crowding out का हुआ है increase in private investment due to fiscal expansion ना decrease in private investment due to government borrowing ना increase in export decrease in inflation crowding out कौन हबो decrease in private investment crowding in refers to government spending increase private investment government taxation decrease investment public investment crowds private sector inflation control by monetary measure कौन है जीवो government spending increases private investment प्राइवेट इन्वेस्टमेंट जदि बढ़ुची ताले क्राउडिंग इन प्राइवेट इन्वेस्टमेंट जदि कमुची ताले क्राउडिंग आउट फिस्कल पॉलिसी मेनली अफेक्ट क्या को अफेक्ट करि थाए फिस्कल पॉलिसी मनी सप्लाई एंड आउटपुट एम्प्लॉयमेंट कौन हबो फिस्कल पॉलिसी अफेक्ट करिबा आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट ट्रांसमिशन मैकेनिज्म ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी refers to tax policy how changes in monetary policy affect output inflation how fiscal deficit are financed government loan to farm कौन हबो how changes in monetary policy affect output and inflation मॉनेटरी पॉलिसी टूल्स इंक्लूड मॉनेटरी पॉलिसी कौन इंक्लूड करता है टैक्सेशन पब्लिक स्पेंडिंग तारीफ इंटरेस्ट रेट एंड ओपन मार्केट ऑपरेशन कौन है जीवो मॉनेटरी पॉलिसी हला इंटरेस्ट रेट और ओपन मार्केट ऑन इन एन ओपन इकोनॉमी मॉनेटरी पॉलिसी इज मोर इफेक्टिव अंडर ओपन इकोनॉमी रे मॉनेटरी पॉलिसी केते बेले बेसी इफेक्टिव होता है फिक्स्ड रेट ना फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट कौन है जीवो फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट In closed economy, fiscal policy is more effective because import and exports matter and no leakages through trade, interest rate is fixed, na inflation is controlled. In a closed economy, fiscal policy is more effective because no leakages through trade. Classical macroeconomics assume sticky price, wage price flexibility, government intervention, unemployment is normal. कौन थिला? Wage price flexibility थिला classical रे. In classical theory, employment and output are determined by aggregate demand, supply side factor, monetary policy, tax policy. Employment output are determined by के determine करतुला supply side factor. क्लासिकल इंपोर्टेंस दिया होता है सप्लाई साइड फैक्टर को सेज लॉ कौन थिला सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी सजेस्ट दैट मनी सप्लाई अफेक्ट इंटरेस्ट रेट ओनली ना मनी सप्लाई हैज नो इफेक्ट ऑन इकोनॉमी मनी सप्लाई अफेक्ट प्राइस लेवल गवर्नमेंट मस्ट कंट्रोल एक्सपोर्ट क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी कौन कहता मनी सप्लाई अफेक्ट प्राइस लेवल Keynes' general theory criticized the role of technology in Say's law in classical economics, government fiscal policy, international trade. क्या को क्रिटिसाइज करथिले केन्स क्रिटिसाइज करथिले क्लासिकल इकोनॉमिस्ट और सेज को सेज लॉ एंड क्लासिकल इकोनॉमिस्ट according to Keynes underemployment equilibrium is not possible na common na only happens during inflation na only in socialist economies underemployment equilibrium is कौन होता है कॉमन होता है in Keynesian labor market analysis
wages are perfectly flexible, wages are sticky, labor supply is infinite, inflation is irrelevant. Keynesian labor market analysis. In Keynesian labor market analysis कौन हुए? Wages are sticky. Keynes rejected the classical idea that money is neutral, government should intervene. Supply creates demand, na both be easy. कौन ହେଇଯିବ? Money rejected the classical idea. कोटा सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड थिला सेज लो ताको क्रिटिसाइज कले आ गवर्नमेंट नो गवर्नमेंट इंटरवेंशन थिला तो गवर्नमेंट शुड इंटरवेन. द फिलिप्स कर्व शोज रिलेशनशिप बिटवीन का भितर फिलिप्स कर्व देखा इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट भितर. द केन्सियल स्कूल बिलीव्स ऑर्थोडॉक्स केन्सियन स्कूल बिलीव्स फुल एम्प्लॉयमेंट विदाउट इंटरवेंशन. ना रोल ऑफ फिस्कल पॉलिसी टू मैनेज डिमांड, टोटल मार्केट सेल्फ एडजस्टमेंट, ना मनी न्यूट्रलिटी. ये कौन करे? ऑर्थोडॉक्स केन्सियन थ्योरी. रोल ऑफ फिस्कल पॉलिसी टू मैनेज डिमांड. ऑर्थोडॉक्स मॉनेटरी स्कूल emphasizes monetary school. Orthodox monetary school emphasizes importance of money supply, wage flexibility, fiscal policy, government ownership. कौन दिबो? Monetarist emphasizes importance of money supply. The quantitative theory of money approach is associated with quantitative theory of money. Keynes, Friedman, Lucas, J.M. Keynes. के हबो? Friedman, Milton Friedman. According to monetarist, inflation is caused by wage growth, na money supply growth, na low taxation, na export. कौन है? Inflation is caused by money supply growth. Money supply जेते बढ़िबो, inflation बा price level सेते बढ़िबो. Expectation augmented Phillips curve analysis was given by expectation augmented Phillips curve analysis. के ଦେଇଛନ୍ତି? Friedman. According to expectation augmented Phillips curve, trade-off between inflation and unemployment is permanent. Trade-off is only short run. Inflation causes unemployment. No relationship exist. कौन हुए? जो ट्रेड-ऑफ होची से देखा जाए केवल शॉर्ट रन रे देखा जाए. The monetary support which type of stabilization policy? The monetary support which type of stabilization policy? Fiscal policy, monetary policy, targeting money supply, na wage control policy, na industrial policy. The monetary support, monetarist का support करथले monetary policy targeting money supply. The new classical economics school is influenced heavily by new classical economics school. का द्वारा influence होतला new classical economics. Keynes, ना मिल्टन फ्रीडमैन, ना रॉबर्ट लुकास, ना एडमंड फेल्प्स. का द्वारा न्यू क्लासिकल रे किए इसबे रॉबर्ट लुकास. न्यू क्लासिकल इकोनॉमिक्स स्ट्रेस का ऊपर है स्टिकी प्राइसेस, रैशनल एक्सपेक्टेशन, गवर्नमेंट इंटरवेंशन, फिजिकल डोमिनेंस. न्यू क्लासिकल का ऊपर फोकस करतले रैशनल एक्सपेक्टेशन. Rational expectation imply that people make random guess, na use all available information efficiently, ignore past trend, are always wrong about future event. Rational expectation imply that people कौन करंती? People use all available information efficiently. Under rational expectation, anticipated policy changes are fully effective, now have no real effect, cause inflation, now increase unemployment. Under rational expectation, anticipated policy changes. कौन हबो? Anticipated policy changes
have no real effects. In new classical model, output fluctuation are mainly due to new classical model रे output fluctuation का ପାଇଁ होची new classical model रे output fluctuation policy intervention technological shock fiscal ना deficit ना monetary instability ये होची technological shock. According to monetarist, short run monetary shock. According to monetarist, short run monetary shock कौन होबो ना do not affect real variable, only affect inflation, affect real output temporarily, have permanent real effect. Short run temporary shock, short run रे कौन रे affect real output temporarily. Milton Friedman कौन देथिले propose the concept of rational expectation, a permanent income hypothesis ना liquidity preference. Friedman कौन देथिले permanent income hypothesis. New classical economics views market as always in disequilibrium, na self-correcting, na dependent on fiscal stimulus, na prone to collapse. New classical economics views market as new classical market टा कौन रोची self-correcting. In the quantity theory of money, velocity of money is assumed to be constant, fluctuating, decreasing, irrelevant. In the quantity theory of money, velocity of money कौन थिला constant. Policy effectiveness proposition was given by policy ineffectiveness proposition was given by के दिथले केन्स ना लुकास सर्जन ना फ्रेडमैन टोबिन. Policy ineffectiveness proposition was given by Lucas and Surgeon. According to monetarist, inflation is mainly a wage problem, fiscal problem, monetary phenomena, political phenomena. कौन है monetarist? Monetary phenomena. New classical model. In new classical model, unemployment is viewed as voluntary, involuntary, structural, permanent. In new classical model, unemployment is viewed as voluntary. In rational expectation model, economic agents systematically make mistake, are systematically biased, make unbiased forecast, और ignore government policy. कौन है जीवो? They make unbiased forecast. Permanent changes in money supply leads to temporary change in output, permanent change in output, permanent changes in price level, no changes at all. Permanent changes in money supply lead to कौन है जीवो? Permanent changes in price level. Orthodox monetary beliefs fiscal policy is very effective, ineffective, always inflationary, always deflationary. कौन है जाए? Monetarist believe करथले fiscal policy टा पूरा ineffective. In new classical thinking, business cycles are caused by new classical thinking. Business cycles are caused by fluctuation in aggregate demand, technological shock, fiscal mismanagement, trade imbalance. In new classical thinking, business cycle टा कौन हुआ? Technology shock. In monetarism, stabilization achieved mainly through wage policy, stable growth of money supply, government spending, and price control. In monetarism, stabilization achieved mainly through price control. এটা कौन है जीवा? Stable growth of money supply.
New classical economist opposes rational expectation, market clearing assumption, active stabilization policy, and technological innovation. New classical economist oppose. New classical economist oppose active stabilization policy. According to new classical model, markets fail frequently, are inherently unstable, clear continuously, require constant intervention. न्यू क्लासिकल मॉडल में कौन हुए मार्केट क्लियर कंटिन्यूसली. Monetarists argue that discretionary fiscal policy is necessary, destabilizing, beneficial, always inflationary. कौन होगा destabilizing. According to Friedman, monetary policy should aim for unemployment reduction, price control, constant money growth, high inflation targeting. Monetary policy should aim for constant money growth. The fluctuation augmented Phillips curve explain the expectation augmented Phillips curve explain long run trade-off, short run trade-off, permanent unemployment, permanent inflation. कौन है जो expectation augmented Phillips curve, short run trade-off disappear with expectation. Under rational expectation, unanticipated policy changes. Under rational expectation, unanticipated policy changes have no real effect, can impact output, always cause inflation, cause deflation. Under rational expectation, unanticipated policy changes have no real effect, can impact output, always cause inflation, cause deflation. It can also impact output. Monetarist views on the Phillips curve suggest trade-off exists in long run, no trade-off in long run, only trade-off exists, inflation always reduce unemployment. Monetarist view on Phillips curve. कौन है जो लॉन्ग रन रे किसी ट्रेड ऑफ रही. In new classical model, workers form expectations about. In new classical model, workers form expectations about prices and wages, technology, export, tariff. Workers form expectation about price and wages. New classical approach to policy suggests government should frequently intervene, government should commit to rules, fiscal stimulus is necessary, wages should be rigid. New classical approach to policy suggests New classical approach to policy suggests government should commit to rules. New classical model assumes information is imperfect, perfect and freely available, only available to government.
ना only with firms कौन था perfect and freely available. Policy ineffectiveness is due to rational agent anticipating policy na sticky wages credit constraint na externalities. Policy ineffectiveness. Ineffectiveness is due to rational agents anticipating policies. Robert Lucas criticized classical theory na Keynesian fine tuning na monetarism rational expectation का criticize करथिले रॉबर्ट लुकास क्रिटिसाइज करथिले केन्सियन फाइन ट्यूनिंग. Monetarist main policy recommendation is fine tuning fiscal policy, stable money supply growth, demand stimulus, price control. Policy recommendation is stable money supply growth. Expectation augmented Phillips suggest inflation expectations are irrelevant, adaptive or rational, always zero, always increasing. Expectation augmented Phillips curve suggest inflation expectations are adaptive or rational. If expectations are rational, government policies are always effective, partly effective, fully ineffective, always inflationary. If expectations are rational, government policies are fully ineffective if anticipated. In rational expectation theory, systematic monetary policy leads to systematic monetary policy leads to real change in output, price level changes only, increase in output, full employment. In rational expectation theory, कौन है जीवो? Price level changes only. In neoclassical economics, market adjust slowly with friction, instantly and randomly. In neoclassical economics, market adjusts slowly with friction, instantly and randomly. Neoclassical, instantly. Permanent increase in money supply causes temporary inflation, permanent output growth, permanent inflation, no changes. कौन है जीवो? Money supply जेते बढ़िबो, inflation सेते बढ़िबो. In the long run, according to Monetarist, output is determined by aggregate demand, money supply, factor like technology, resources, and fiscal policy. According to Monetarist, factor like technology and resources. Orthodox Monetarist argues government should constantly intervene, follow discretionary fiscal policy, allow free market operation, frequently adjust tax rate. Orthodox Monetarists argue government should कौन करिबो free operation বা free market operation. New classical model emphasize new classical का ऊपर emphasize करुछि wage rigidity, policy activism, perfect competition and flexible prices, na large government spending. New classical model emphasize
New classical model emphasizes on perfect computation and flexible prices. Monetarist and new classicals agree that fiscal policy is always effective, monetary policy should be rule based, market intervention are necessary, Phillips curve is flat. Monetarist and new classical agrees that monetary policy it should be rule based. हाँ ये थिला 160 जाए क्वेश्चन थिला आ जदि देखिबो अन्य कोर पेपर अपेक्षा ये टिके डिफिकल्ट थाए हाँ जदि कोर पेपर अच्छे ता भितर जदि देखिबो टिके डिफिकल्ट रहिबो मैक्रो इकोनॉमिक्स रो लास्ट पेपर आ काली के 90 ऊपर रखिलो कि रे काली सेकंड मॉक टेस्ट कार अछि 90 ऊपर कार अछि शहेटा क्वेश्चन अच्छे है सेकेंड रे क्वेश्चन गुड़ा से भाया क्वेश्चन आसे जोड़ा डायरेक्ट क्वेश्चन जी रही भाया क्वेश्चन आसे जदि क्वेश्चन डायरेक्ट रहा बेसी डिफिकल्ट न आसिले डायरेक्ट क्वेश्चन आसो जेहेतु नेगेटिव मार्क अच्छे क्वेश्चन प्राय सिंपल क्वेश्चन रजी क्वेश्चन टे रही मैथ हार्ड कौन मैथर एप्लिकेशन गुड़ा आसो मैथर एप्लिकेशन केमती तुम जो एवरेज मार्जिनल जो रिलेशनशिप थाए मैक्सिमाइजेशन मिनिमाइजेशन है जी अच्छे तार एप्लिकेशन को लेकिन एप्लिकेशन बेस्ड क्वेश्चन आसो जी क्वेश्चन कराई से काफी बा सफिशिएंट पचार सफिशिएंट केबे भी न थाए कुछ बुझिपार क्वेश्चन जदि आमे करंतु आमे निजे कहीदेवा जे एतिकी सफिशिएंट क्वेश्चन केबे कहि परिबनी कोनोसी पाठ को नै जे एतिकी पढिले सफिशिएंट ये होची एंट्रेंस ये सेमिस्टर क्वेश्चन हेदिला हम जान देई थानते एतिकीटा लॉन्ग क्वेश्चन अछि आरि भितरु आसीबो एंट्रेंस क्वेश्चन रे से सेम सिलेबस रे जे क्वेश्चन करिवो तांको ऊपर डिपेंड करे से को लेवल रो क्वेश्चन करिवे से चाहेले क्वेश्चन बहुत हार्ड भी हो पारे क्वेश्चन मॉडरेट हो पारे क्वेश्चन इजी हो पारे तेणु क्वेश्चन कौन करूचंते जेहेतु टाइम कम देइचंते आ नेगेटिव मार्क अच्छी से लगी आम आशा करिबा जे क्वेश्चन गुड़ा प्रायतः इजी रहिबो किछि मॉडरेट क्वेश्चन आसीबो मैथ रो किछि क्लास करी मैथ रो एबे मैथ करे टाइम नाही जेति कि तुम मैथ जेति कहबो कला भलिया किंतु मैथ जो क्वेश्चन पचार मिसे कि 15 पर क्वेश्चन आसीबो मैथ स्टैटिस्टिक्स मिसे 15 20 पाखापाखि रहिबो मैथ रो तमे एप्लिकेशन गुड़ा देख किछि न आसिले
कंज्यूमर सरप्लस प्रोड्यूसर सरप्लस जदि करि परछ क्वेश्चन पाई जिवो आउ से एससी एमसी टीसी यार रिलेशनशिप को नहीं के आसीबो एआर एमआर टीआर जते प्रकार एप्लिकेशन हे परिबो होला एप्लिकेशन गुडा इलास्टिसिटी गोटे क्वेश्चन सियोर आसीबो क्वेश्चन आसीबो मैथ रो तो क्वेश्चन रहिबो जेहेतु दीटा पेपर अछि मैथ रो क्वेश्चन तो रहिबो मैथ स्टैटिस्टिक्स मिसी के भाबी था 15 रु 20 क्वेश्चन भाबी था मैथ स्टैटिस्टिक्स मिसी के एप्लिकेशन पाई बेसी फार्मूला किसी दरकार नहीं डेरिवेटिव इंटीग्रेशन रो गोटे फार्मूला जानले भी एप्लिकेशन करि हिजबो किंतु एप्लिकेशन जानि थिबा दरकार को केस रे कोन अप्लाई करा जाए क्वेश्चन जेते डिफिकल्ट पड़ेनी से टाइम रे तुमको सेते डिफिकल्ट लागिबो जेहेतु टाइम कम थाए 30-40 सेकेंड भितर सारिबा को पड़े तेणु से टाइम रे क्वेश्चन डिफिकल्ट लागिबो घरे आसी कले से क्वेश्चन हे जिवो सेतिक बेल को डिफिकल्ट लागिबो एठी मॉक टेस्ट सब क्वेश्चन अटेम्प्ट नउचो सेठी नबनी नेगेटिव मार्क अछि नेगेटिव मार्क अछि जमा जोटा न आसुची जमा ताको छाड़िबो इवनिंग रे नहीं हबनी नेटवर्क इश्यू रहइबो इवनिंग रे मु देखो जदि टेस्ट हे परे ओटे पठै देबी इवनिंग रे जति क्वेश्चन आसीबो जदि 60 टा क्वेश्चन 100 रु आसुची 60 पाखा पाखी क्वेश्चन आसिले भी सेतिकी करिवो नेगेटिव मार्किंग पाई अधिका अपियर करिवनी जोटा जमा आसुनी ताको पूरा छाड़िबो दीटा भितर डाउट अछि अटेम्प्ट नहीं पारो किंतु जमा किछि जणा नहीं गोटे क्वेश्चन विषय रे ताल ताको छाड़िबो तमे जदि सबु कर दबो क्वेश्चन 100 रु केते सेफ स्कोर से तो डिपेंड करे क्वेश्चन लेवल ऊपर क्वेश्चन जदि इजी आसिला 100 रु 70 रखिले भी कमी जीव स्कोर क्वेश्चन जदि डिफिकल्ट आथिला 100 रु 40 रखिले भी बढ़िया स्कोर होला एटा क्वेश्चन आसे सारू एग्जाम हेला पर जाई जणा पड़िबो क्वेश्चन को लेवल रे आछि ऑन एन एवरेज केते करि परिबे पिला से हिसाब रे एठी तो पास फेल कथा नुह एठी रैंक ऊपर डिपेंड करे तेणु क्वेश्चन लेवल को देखिके हो जदि क्वेश्चन इजी आसिला करिवो क्वेश्चन बेसी डिफिकल्ट अछि आसुनी जोटा छाड़िबो किंतु मिनिमम तो 50 पर स्कोर रखिबा पई ट्राई करिवो मिनिमम अटेम्प्ट तो नबो 50 पर अटेम्प्ट नबो न सब छाड़ दे आसीबो जदि 10 20 अटेम्प्ट नबो ताल किछि होबन हो सेमिति मिनिमम केते अटेम्प्ट किछि न थाए किंतु जेतिके आसुची आगो करिवो देखिवो केते क्वेश्चन करलो केतेटा रहिलानी बाकी तेणु 50-60 पर अटेम्प्ट करिया पई ट्राई करिवो जेतिके आसुची किंतु सेटा हला फास्ट रूल जेतिके आसुची सेति करिवो तापरे जो दीटा ऑप्शन भितरे डाउट जदि सेई गुडा अटेम्प्ट नबो एतिके हला कथा जो क्वेश्चन जमा जणा नै ताको छुईबनी
टाइम बहुत कम बुझिपार टाइम मिल 30 सेकेंड भावी था गोटे क्वेश्चन को माने पढ़िबारे जेतिकी समय पड़ोची सेतिक टाइम आम गोटे क्वेश्चन पढ़ला बेले 30 सेकेंड पड़ोची क्वेश्चन गोटे पढ़ी ता ऑप्शन पढ़ला बेले 30 सेकेंड तुमको तारी भितर क्वेश्चन पढ़ी कि आंसर कौन हम पुणी बेले बेले कैलकुलेशन थी कि कौन करके बाहर करिया पड़ो ता सहित ओएमआर सीट रे जो डार्केन करिवो ए सबु पाई मिलिबो 40 सेकेंड तेणु तुम एवरेज रखि गोटे क्वेश्चन को 30 सेकेंड भितर जमी कर 30 भाविले से 40 रु अधिका ही पड़ेब टाइम तेणु ता उपरे डिपेंड करे टाइम मैनेजमेंट टिके आग जो क्वेश्चन गुड़ा आसूची ताको करि चलिबो आग हाथ में 50-60 क्वेश्चन हो गला आउ जदि किसी समय अच्छी तापरे भाविबो को क्वेश्चन एग्जाम हॉल को कौन नहीं जीव से एडमिट कार्ड आसू एडमिट कार्ड पछरे लिखाई न एडमिट कार्ड आसने कि एडमिट कार्ड पछरे लिखाई ताको पढ़ी की जीव ना रूल रेगुलेशन सब पढ़ी की जीव हो हाँ तुम जाओ पढ़ापढ़ी कर हो थैंक यू एवरीवन जाओ पढ़ापढ़ी कर